Welcome, dear friend. So we are studying about the bacteria. Bacteria, that is Jivanu. It is cellular. That means made up of cell, and cell always have cell wall. Okay, cellular, parasite or saprophytic or autotrophic. Autotrophic. So cellular parasitic, it causes harm, give disease to the living organism, that is to the animal, to the human being, to the plant. They are parasite. They are saprophyte. That means they some bacteria feed upon the dead organic matter like the stale roti, chili chapati, stale rice, cooked rice, dead organism, whether plant or animal. So on such dead organic matter, some bacteria species feed upon it. Okay, so it play a role of scavenger. That means it attack on the dead organic matter and decompose it, disintegrate it, and that debris the remain get mixed into the soil, and in this way the soil become once again fertile. So it helps into fertility of soil and also to clear the place on earth. Okay, so for some days foul smell is emitted out from the dead organic matter. Then thereafter all dead bodies get decomposed by bacteria. Some fungi also attack. Some other microorganisms are there, and some vultures, etc. These also fed on that dead organic matter, and that dead part on the land, then it get vanished off or disappear within some period. Okay, so they are the parasite, cause harm to the living. They fed up on the dead organic matter, that is the saprophytic, and they are the autotrophic. Some bacteria have some lamelles inside their cell, and with help of the sunlight or with help of the inorganic material which is present surrounding to them, utilizing them, they synthesize their own food. Okay, so they are the autotroph. Okay, bacteria, their size is 0.5 to 500 nanometer, but actinomycetes, these are the types of bacteria whose length is much longer. Okay, so these are the bacteria. There are some forms of bacteria: focal form, spherical, bacillus, cylindrical, spiral, vibrio, and the spirochetes. Okay, let me see. So now let's study about the structure of bacteria, detailed structure of bacteria. That is, suppose this is a typical structure of bacteria. It is cuboidal in shape and brick in shape. Okay, so this is a cell membrane. Cell membrane is simple simple and similar type of cell membrane where it found. So in so many organisms, the membrane are there, and that type of membrane is also here. Okay, their composition, cell membrane composition is like this. This is lipid, and in which the proteins are suspended. Okay, and by this way membrane is formed. Membrane. Okay, so this membrane totally covered the cell. That's why known as the cell membrane. Okay, so surrounding to the cell membrane there is cell wall. Okay, cell wall is not composed of cellulose and hemicellulose and pectin material which is there in plant cell, but cell wall of the bacteria is known as murine. Okay, and mainly it consists the peptidoglycan. This is the peptido means protein, glycan means carbohydrate. So it is a mixture of protein and carbohydrate. So peptidoglycan, more percent, 80% of peptidoglycan is there,
and along with peptidoglycan, other material is there. One of the significant material, important material other than peptidoglycan is teichoic acid. Teichoic acid. So this is the cell wall. So when this bacteria is stained with gram stain, stain मतलब coloring agent or dye. So one of the stain known as gram stain, and this gram stain is particularly used to color the bacteria. Otherwise, it is colorless. And if you want to see the bacteria under microscope, then it is somewhat difficult to see it. Okay, so a staining procedure is there. So with help of that stain, we color the material present and we take that material on slide and observe under microscope. So it become clearly visible. Okay. So there is a stain. There are lots of different types of stain, but to stain the bacteria, generally gram stain is used. Gram stain. This name is derived from these scientist Christian Gram. Christian Gram was the Danish scientist. Danish means from the country Denmark. So it is the scientist from Denmark, Danish scientist Christian Gram, who discovered or who prepared a stain which is purple or violet in color, this stain. And when stain is applied on bacteria, so bacterial cell wall take up that stain and turn or convert the cell, that means their cell wall. When we color our body, so our skin only take that color. It cannot percolate into our body. So it remain adhered, stick with the skin. So likewise, cell wall get stain. That is, it become purple in color. Then thereafter, 95% ethyl alcohol is used. 95% ethyl alcohol is used, applied. Then what happened? Some bacteria lose its purple color stain and again become colorless. So gram stain, as we stain all type of bacteria, they turn into purple or violet color, and when washed with 95% ethyl alcohol, some bacteria lose its color and become once again into colorless. So such bacteria is known as gram positive and gram negative bacteria. Whereas some bacteria, after washing with 95% alcohol, first applied the gram stain, it become purple, then apply 95% ethyl alcohol, still they don't remove their color, they still remain purple in color. So that means they do not lose their color after washing with 95% alcohol. Such bacteria is known as gram positive bacteria. So the bacteria can be fall into two categories, can divide into two categories. One is the gram negative and one is the gram positive. In gram positive, after washing with 95% alcohol, it will not lose their color and they remain purple. And in gram negative bacteria, they lose their color and again become colorless. Okay, so the procedure is also discovered by the Christian Gram. So staining technique is known as the gram staining, and that stain which developed is known as the gram stain, which is purple or violet in color. Okay, so such type of cell wall is there, that means after covering is of cell wall, that is the teichoic acid and peptidoglycan. Peptidoglycan is more, teichoic acid this is present in traces. Okay, so these are the gram positive bacteria. But in case of gram negative bacteria, what happened? There is a cell membrane, then there is a space. Okay, little space, narrow space is there, and again cell membrane, extra layer of cell membrane, trapping little space in between these two adjacent cell membrane. Then there is a narrow layer of peptidoglycan or medium. So peptidoglycan and teichoic acid, etc. are there, but it is narrow. And again it is covered by the cell membrane. So peptidoglycan is not exposed toward the outer side.
So it is get covered by cell membrane. That's why what happened when we apply gram stain, so it become purple in color. But when washed with 95% alcohol, they lose their color, and they now they are known as the gram negative bacteria. So gram negative bacteria, the cell wall arrangement is like this. Innermost there is a cell membrane. Again there is a layer of cell membrane, and then there is a narrow layer of peptidoglycan and the calcium acid as usual, and again it is covered by the cell membrane. So this peptidoglycan or murine layer is trapped within 2 meters. That's why they are the gram negative. And in case of gram positive, outer membrane is not there, inner membrane is not there. This peptidoglycan or murine layer directly deposit on cell membrane के ऊपर directly deposit रहते हैं, and they are somewhat thicker. Their layer is thicker. So this peptidoglycan is exposed from outside. So that's why it is colored purple after staining with a gram stain, and after washing with 95% alcohol, still they retain their color because it is exposed toward the outer side. So this is the difference in cell wall of gram positive and gram negative. And again, this peptidoglycan is not known, not recorded from plant cell wall. Plant cell wall contain cellulose, whereas this contain the murine, that is peptidoglycan, calcium acid, and other things. Okay, so cell wall. Then sometimes what happened? This cell wall is deposited there by the metabolism. Here, cytoplasm and other protoplasm is there. This content is known as the protoplasm. Protoplasm. Okay. So protoplasm. This protoplasm metabolize, they react and produce this compound nitric acid, peptidoglycan, etc. And it gets secreted from the cell membrane toward the outer side, and this then get deposited. Okay. And it is where cell wall is formed. So cell wall layer is not come from outside. It is developed, it is produced, it is synthesized by the cell, and from inner side it is then percolate, secrete outside, and it get deposited. Okay. Then in some bacteria, again they produce and it secrete, that material secrete outside to the cell wall, and it get deposited over the cell wall, and this is key. And much of the carbohydrate is there, and known as the slime layer. Slime layer, chip-chipadra, chikat. That is the some amount of protein is there, but mostly they contain the carbohydrate. And this is produced by the bacteria. When bacteria is present in a full nourished environment. So suppose this bacteria is placed or present in plenty of nourishing material, and plenty of food is available there. Then bacteria absorb this food material and they metabolize, they process, and this slime layer they produce, which get secreted outside. These help this bacteria from being shrink. When temperature or external forces is there, so it protects bacteria from the outer force. Okay, temperature, heat, etc. And likewise, and also when there is starvation, that means there is minimization of food material surrounding to them, then it reabsorbs this slime material and it uses as food. So these are the reserve food which is reserved outside the cell. Generally, cell reserve their food material inside the cell, known as the reserve food material. Here, they also reserve food material. Some food material they reserve, but some food material they secrete outside, and they, in this way they preserve in form of the slime layer. Okay, slime layer. Okay. So this one. Then there are small blepharoplast granules. Blepharoplast granules, and from the blepharoplast granules, the ciliated portion, cilia, small cilia, is developed, hair-like structure developed,
and known as the pili. Pili is plural word. Pilus is singular word. Singular, but they are always more in number. They are known as the pili. Pili. Okay. They are small hair-like structure and thinner one, and these present all over the body of bacteria. Bacteria के पूरे सेल पर से ये डेवलप हुए रहते हैं. Okay, and they show regular bleeding. While like the way, when these say want to some activity, want to show some activity, they beat in synchronized manner. So like this wave like. So like that there are some grasses and you just move your hand palm over to the grass, then the synchronized wave is there. Likewise, they beat synchronized. Okay, these are the celia. They have more or less similar. Okay, some bacteria don't have flagella, long hair-like structure. Okay, but most of the bacteria they have flagella, and flagella is developed from the larger size blepharoplast granule. These are smaller blepharoplast granule, and some are larger blepharoplast granule. Some bacteria don't have flagella, whereas some bacteria have only one flagella, and flagella's length is much more than the length of bacteria. Bacteria के length से भी ज़्यादा length रहते हैं, डबल टिबल रहते हैं, बड़ी लंबी ऐसे मतलब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, या फिर आप उसको कुछ भी समझ सकते हो. तो एक ही रहता है ऐसे नहीं है, तो पूरे शरीर भर में रहते हैं. Their number is less than the pili, but they are present all over the bacterial surface. Some bacteria don't possess any flagella. They are without any flagella. Some bacteria possess single flagella. Some bacteria possess so many flagella. Some bacteria possess flagella from both ends, from this end and from this end. Some bacteria produces a tuft of gucha, tuft, T-U-F-T, tuft of flagella from one side and tuft of flagella from other side. In some bacteria only tuft of flagella from one side. So any type is possible with respect to the flagella, and it is occurred as like this in bacteria. Okay, so these are the flagella. These are the flagella. So it is a typical structure. So I am drawing here a single flagella. So flagella is also a like structure or weak-like structure. Weak मतलब चाबुक, ठीक है? तो ये होता है flagella. Flagella मतलब single और flagella मतलब plural. जैसे बहुत सारे को इंडिकेट करने का रहा तो सिलाई लिखते और एक दूसरे को इंडिकेट करने का रहा तो पाइलस लिखते. तो pili. Okay, and this is the flagella. Okay. So pili and flagella. Flagella is made up of flagellin protein. Flagella is made up of flagellin protein, and pili is made up of pilin protein. Pilin. So protein name pilin and protein name flagellin. Okay. And here 9 molecule of, in case of flagella, 9 molecules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the 9 flagellin molecules which are peripherally and having central hollow tube-like structure. And they, because these are arranged peripherally, so that by this manner the flagella is made up. So flagella is made up of flagellin protein, and they have the 9 molecules arranged in peripherally. Likewise, pili protein. Suppose this is the pili. So pili is made up of pilin. So 9 pilin molecules arranged peripherally and having the central lumen hollow, and in this way pili is formed. They are smaller in size, in length, and it is larger in length, and it is somewhat tapering toward the end. Okay, and this originate when they pass through the cell wall से जब pass करते हैं, so there is some hard part, and thereafter a flexible part is there. So this hard part is there, which is present in the cell wall, and the flexible part which can beat, which can move, is present outside. Okay. So in both the cases, there is arrangement 9 protein arranged peripherally,
and having the halo, tubular. It is tubular. अगर बीच में से देखते हो तो वो अच्छे. अगर आप अलगी या फिर ये फंजाई का सेल है, तो अलगी फंजाई में ब्रायोफाइटा के एंथ्रोजोइड में भी फ्लैजिला रहते हैं. मतलब प्लांट में भी कुछ सेल में फ्लैजिला रहते हैं, लेकिन इनका फ्लैजिला कैसे रहता है कि 9 ऐसे फ्लैजिलिंग मॉलिक्यूल रहते हैं, लेकिन बीच में 2 और से मॉलिक्यूल रहते हैं. तो इसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट. So 9+2 arrangement is present in eukaryotic. These are the eukaryotic organisms. Bryo, fungi, algae, bryophyta. In case of gymnosperm, in case of pteridophyta, if flagella is there, then that organism is known as the eukaryotic organism. Eukaryotic organism. So in eukaryotic organism, there is arrangement 9+2. That means 9 is arranged coequivalent and 2 are present at the center. And in case of prokaryotic, because bacteria is prokaryotic, because there is single DNA, circular DNA, and not covered by cell membrane. So first type of cellular arrangement, अगर cell में इस तरह से है, that means DNA is there, but it is not covered with nuclear membrane. So first type of cell is known as the prokaryotic cell. और यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ DNA रहते हैं, both side रहते हैं. जैसे यहाँ एक है, तो यहाँ both side रहते हैं. both side रहते हैं मतलब हर एक का particular number रहता है. जैसे ह्यूमन बीइंग में 48 क्रोमोसोम रहते हैं, तो जितने क्रोमोसोम रहना है उतने डीएनए वहाँ पे डीएनए क्रोमोसोम बनता है. तो इतने डीएनए अभी इतने क्रोमोसोम रहते हैं, तो उसके अराउंड में वहाँ पे एक डेफिनेट मेम्ब्रेन वहाँ डेवलप हो गया रहता है, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस दैट मीन्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंक्लूजिंग द जेनेटिक मटेरियल दैट इज हियर. ओके, सो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर. Then such cell is known as the eukaryotic cell. Karyo means chromosome. So U means 2. तो ये 2 टाइप का है. ये फर्स्ट है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी डीएनए का बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल है ये भी. इसको सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम कहते हैं, सर्कुलर क्रोमोसोम. लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा एक डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे नहीं. ठीक है, तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. और ये प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब जब सबसे पहले धरती पे बैक्टीरिया वगैरह आए थे, अपन तो नहीं थे, बाकी प्लांट भी नहीं थे, तो जब बैक्टीरिया आए थे तो पहले तो सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा. तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से सिंपल है, मतलब से डीएनए हो गया बस. फिर बाद में जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया तो क्रोमोसोम को लगा के अपने ऊपर उसको भी प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए. तो एक सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन ही है, तो सेल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इसके ऊपर कवर हो गया. इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो पूरे सेल भर का है इसलिए इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये फिर ये स्ट्रक्चर को नाम दिया है न्यूक्लियस. एंड फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल प्रेजेंस इज नोन एज द यूकैरियोटिक. कैरियो मींस क्रोमोसोम डीएनए, यू मींस 2. It is not fast, it is also true, but it is primitive type, so that's why known as the prokaryotic. Prokaryotic. Pro means primitive. Okay. So eukaryote have 9+2. It is solid. It is not hollow. इनके जो फ्लैजेला रहते हैं वो सॉलिड रहते हैं. ठीक है, गप्प रहते हैं अंदर से, जैसे चॉक है, कोई हालो है क्या? नहीं. लेकिन इनकी फ्लैजेला और इनकी फिलाए देखेंगे तो ये बीच में से मतलब हालो ट्यूब की है जैसा ल्यूमेन है जैसा दिखेगा, क्योंकि बीच के 2 वहाँ नहीं रहते. तो 9 पेरिफेरली मॉलिक्यूल वहाँ इस तरह से. ठीक है, एक सेकंड और से चेक करते रहना पड़ता है, कभी कुछ हुआ क्या. ठीक है, तो यहाँ 1 या 2 किसी जगह पे, लेकिन क्लोज टू द क्रोमोसोम वहाँ पे ऐसे कन्वोल्यूटेड मतलब ऐसे फोल्डेड ऐसे मेम्ब्रेन रहता है. इट इज इन्वेजिनेशन. अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, तो ये अंदर की तरफ इनफोल्डेड रहता है. अगर समझ लो कि ये मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ फोल्डेड है या बाहर की तरफ है, तो उसको कहते हैं इमेजिनेटेड. और इनको इमेजिनेटेड मतलब बाहर की तरफ निकला वाला, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं रहता है, तो ये अंदर की तरफ रहता है, तो इसको कहते हैं इन्वेजिनेशन. सो इट इज इन्वेजिनेशन ऑफ convoluted, folded, invagination of cell membrane, and its number is 1, 2, 3, not more than 3. 1, 2, 3 are few, 1 or mostly 1, but sometimes there consists more than 1 number. Okay, and these are always present near to the single circular DNA, that is chromosome. So chromosome, it is not necessary that chromosome should always present at the center. It may be present toward this side,
Sometime in other time, they may come near to this. These are not generally shifting from one place to another place regularly and commonly. Their shifting is very slow, and suppose it is localized, that means it is placed, its space is placed, and near to it there is a this structure. This is known as the mesosome. 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 So these are the mesosome. So earlier it is considered that mesosome is a site for respiration, because this is organism and organism need to respire. Respiration करना जरूरी रहता है. तो respiration के लिए यहाँ जो मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ पे respiration के एंजाइम्स रहते हैं, मुझे ऐसे लगा था. लेकिन फिर बाद में डेटा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पता लगा कि यहाँ उतने क्या बोलते हैं एंजाइम्स नहीं रहते हैं. तो रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो पूरे उसके मेम्ब्रेन भर में रहते हैं. तो यहाँ इस मेम्ब्रेन में जो एंजाइम्स है उस एंजाइम की मदद से वो रेस्पिरेशन करता है. बल्कि इसमें यूकैरियोटिक सेल में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं. प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो भी है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है. तो यहाँ रेस्पिरेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, these are present in the neck. Okay, so this is not the site. So it is the site through which अगर ये एक बैक्टीरिया है, ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए या डीएनए का कुछ पार्ट यहाँ का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में. So this transfer it takes place via the mesosome. It will not take place from other side other than mesosome. So it always takes place via यहाँ से ही वो दूसरे इसमें अगर डीएनए या फिर यहाँ से डीएनए आना है तो उसके मेसोसोम से यहाँ है. ऐसे भी जरूरी नहीं कि इसका मेसोसोम नजदीक होगा तो मेसोसोम आता है. ये इसका मेसोसोम है तो यहाँ से ऐसे आएगा, और इसका मेसोसोम यहाँ नहीं है तो भी यहाँ से ये डीएनए यहाँ आ जाएगा. तो दूसरे मतलब जहाँ ट्रांसफर करना है वहाँ पे वो मेसोसोम वाली साइड रहनी चाहिए, जरूरी नहीं है. लेकिन जब जाता है तो वो मेसोसोम से जाता है. और मेसोसोम नंबर आर वेरी फ्यू, 1 2 or sometimes rarely 3. But single mesosome is generally there. This structure invagination of cell membrane enfolded, known as the mesosome. Okay. Then there are the ribosomes. This is ribosome. So this single structure consists of 2 subunits. ये दो सब यूनिट का एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है. तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं राइबोसोम. और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसका राइबोसोम कहलाता है 70s. और यहाँ जो राइबोसोम रहते हैं ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ के राइबोसोम को कहते हैं 80s. थोड़ा बड़े साइज का रहता है और ये छोटे साइज का रहता है. तो ये है 70s. तो यहाँ जो दो सब यूनिट से बना हुआ रहता है, तो एक लार्ज सब यूनिट रहता है, एक सब यूनिट बड़ा रहता है which is known as the 50s, एंड जो छोटा रहता है वो होता है 30s. तो छोटा सब यूनिट वो होता है 30s, और s means sedimentary coefficient. I will explain you later on. So 30s and 50s. 30 plus 50 how many? It becomes the 80. But it is known as the 70s. And here ribosome in eukaryotic cell there are also 2 subunits. Larger subunit is known as the 60s and smaller subunit is known as the 40s. 60 plus 40 how many? It becomes the 100. But this ribosome is known as the 80s. So what happened? Suppose these are the 2 volumes. If these 2 structure get fixed, that means into the cleft some elevated part get inserted into it, and total area become less. So likewise this, when they are separate, there one is 30 years and other one is 50 years. But when they combine and form a complete ribosome, its size become shortened. So such type of ribosomes are known as the 70s ribosome. And 70s ribosome is only found in these prokaryotic organism. And in eukaryotic organism there is 80s ribosome. There is also 70s ribosome, but 70s ribosome only present in chloroplast and mitochondria. Eukaryotic animal cell only in mitochondria there is 70s ribosome, and in cytoplasm में पूरे 80s ही रहते हैं, लेकिन उसके माइटोकॉन्ड्रिया में 70s रहते हैं. अगर वो प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है. न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया, तो इन दोनों के अंदर ये 70s टाइप के राइबोसोम्स रहते हैं. ठीक है. बाकी ये साइटोप्लाज्म में कौन से रहते हैं? 80s के.
और यहाँ पे ऐसा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, तो उसके साइटोप्लाज्म में जो रहते हैं वो कौन से हैं, 70 ईयर्स के। तो 70 ईयर्स यहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो एसेंशियल सब जगह रहता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल, प्लांट के कुछ सेल में, सभी सेल में क्लोरोप्लास्ट रहता है ऐसे नहीं है। अंदर के सेल जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचता वहाँ के सेल में क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं रहता। तो जो मतलब सरफेस की तरफ है, आउटर साइड में, जहाँ से वो मतलब सनलाइट में एक्सपोज हो रहे हैं, जिसके ऊपर सनलाइट गिर रहा है, तो वैसे ही जो सेल है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, फिर यहाँ अल्फा और बीटा ग्रैन्यूल्स रहते हैं, अल्फा और बीटा ग्रैन्यूल्स रहते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा ग्रैन्यूल्स रहते हैं। और यहाँ पे रहता है कुछ इरेगुलर फॉर्म का, बड़े बड़े साइज का पॉलीमेटाफॉस्फेट, इसको कहते हैं पॉलीमेटाफॉस्फेट, या फिर वोल्यूटिन ग्रैन्यूल। तो ये होता है पॉलीमेटाफॉस्फेट या फिर वोल्यूटिन ग्रैन्यूल। इसमें मान लो क्या फॉस्फेट स्टोर होके रहता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो जल्दी 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 इस तरह से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जितनी जल्दी मतलब जितना अच्छा मतलब सुटेबल एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे वो जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने नंबर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जब नंबर इंक्रीज करते हैं तो 1 के 2 बैक्टीरिया बने हैं, तो दोनों बैक्टीरिया में ये क्रोमोसोम जाना ही चाहिए। ठीक है, 2 के 4 बन गए तो चारों में क्रोमोसोम रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 के 2 बने तो एक में क्रोमोसोम डीएनए और दूसरे में डीएनए नहीं है, तो वो तो सेम मर ही जाएगा। तो ये डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए फॉस्फेट जरूरी रहता है। तो फॉस्फेट का सोर्स, फॉस्फेट प्रोवाइड करने का स्टॉक जो है वो इसमें रहता है, जिसको कहते हैं पॉलीमेटाफॉस्फेट या फिर वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। ओके, तो ये होते हैं अल्फा बीटा ग्रैन्यूल्स एंड वहाँ रहते हैं पॉलीमेटाफॉस्फेट। और वहाँ रिजर्व फूड मटेरियल भी रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वो फूड रिजर्व करके रखता है, तो ये होता है ग्लाइकोजन। सो इट इज वेरी सिंपल। एंड एक बैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक वन, देन इन सम केसेस लैमेलिस आर देयर, लैमेलिस very elongated pouches are there, and in which the photosynthetic pigments are there, bacteriochlorophyll, and with help of which that bacteria perform the photosynthesis. But most of the bacteria which are not heterotrophic, they are heterotrophic. So heterotrophic means they are either parasitic or saprophytic. Parasitic means वो भी heterotrophic हुआ लेकिन लिविंग के ऊपर रहता है, तो saprophytic वो भी heterotrophic हुआ क्योंकि खुद का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो भी हेटरोट्रॉपिक हुआ लेकिन वो मतलब लिव कम होता है ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक है उनमें फोटोसिंथेटिक लैमेली रहती है, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, पूरे मेम्ब्रेन पर। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी यहाँ रहने चाहिए लेकिन वहाँ वो रहते हैं। ठीक है, यहाँ रेस्पिरेशन, तो ये मेसोसोम, सिंगल सर्कुलर डीएनए। समटाइम मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कंटेन स्मॉल कॉपी ऑफ डीएनए, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए इस तरह से, डीएनए ये इस तरह से कॉइल, स्पाइरल कॉइल एंड डबल स्ट्रैंडेड। वायरस को छोड़ के सभी में डीएनए रहता है एज ए डबल स्ट्रैंडेड, और वही जेनेटिक मटेरियल रहता है सभी में, वायरस को छोड़ के। माइकोप्लाज्मा लो, कुछ भी लो, अलगी लो, कुछ भी लो, फंजाई लो, एनिमल लो, ह्यूमन बीइंग लो, प्लांट लो, कुछ भी लो। तो ये डीएनए को आप ओ से फोल्डिंग, डीफोल्डिंग, कॉइलिंग कर रहे हैं, तो ये होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए। उसकी साइज अगर उसको एक मतलब पूरा फैलाएंगे तो उसकी साइज बहुत बड़ी आती है, बहुत बड़ी हो जाएगी, ये इससे भी बड़ी। लेकिन वो कॉइल रिकॉइल होके ऐसे ये कॉम्पैक्ट हो जाता है एंड बिकम अकोमोडेट विद इन सेल के अंदर वो अकोमोडेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक डीएनए की स्मॉल कॉपी रहती है, इसको कहते हैं प्लास्मिड। These are important plasmid. These are important इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है प्लास्मिड, इसको कहते हैं प्लास्मिड। इट इज स्मॉल कॉपी ऑफ डीएनए, स्मॉल साइज डीएनए। इट इज आल्सो सर्कुलर, इट इज नॉट लीनियर। लीनियर मतलब ये जिसके 2 एंड फ्री है, ये 2 एंड को ज्वाइन कर दो तो वो क्या बन जाएगा, सर्कुलर। तो ये भी सर्कुलर रहता है, ये सर्कुलर रहता है, वैसे ये भी सर्कुलर रहता है। एंड इट कैरी सम इंपॉर्टेंट जीन, लेस जीन, मतलब पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। तो ये बड़ा है, तो यहाँ छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे हैं, तो इट हैज मोर नंबर ऑफ जीन। ये छोटा है क्रोमोसोम,
तो इसका पार्ट बोले तो जीन, तो यहाँ ये कैरी करता है या कि इसको कहते हैं डेटा, इट हैज लेस नंबर ऑफ जीन बट दैट जीन आर इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एंटीबायोटिक डाला तो बैक्टीरिया मर जाता है, तो कुछ एंटीबायोटिक से नहीं मरने चाहिए, इसलिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम ये डीएनए करता है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वहाँ रहता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्लास्मिड, इट इज इम्पोर्टेंट and very much important. This part is technology and microbiological field. The plasmid has much more role. Okay, so this is about the internal structure of bacteria, ultra structure. अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगी। अगर आप माइक्रोस्कोप में अपने यहाँ माइक्रोस्कोप है उसके अंदर अगर देखने को इसी तरह के बात को ऐसे देखिएगा, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इतना डिटेल इतना रिवील नहीं होगा, लेकिन to reveal all the internal and data structure, we need to have image of bacteria through the electron microscope. Okay, so this is ultra structure of bacteria. Simple. Pila, flagella, cell wall. ग्राम नेगेटिव का नेगेटिव में दोनों तरफ से मेम्ब्रेन रहता है, तो ग्राम पॉजिटिव में मेम्ब्रेन उधर रहता है, डायरेक्ट पेप्टिडोग्लाइकन यूरिन का रहता है, उसके ऊपर स्लाइम लेयर रहती है, ठीक है, और फिर अंदर में ये मेसोसोम रहता है या अल्फा बीटा ग्रानुल्स रहते हैं, पॉलीमेटाफॉस्फेट रहता है जिसको गोल्डन ग्रैन्युल कहते हैं, राइबोसोम्स रहते हैं, सेवन टाइप के राइबोसोम या आरएनए के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कुछ आरएनएस है, दीज आर द आरएनएस, मतलब आरएनएस, बहुत सारे आरएनएस यहाँ रहते हैं आरएनए में। ये एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मा, ठीक है, कुछ स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इज आल्सो ओके, एंड राइबोसोम्स आर देयर, एंड राइबोसोम्स आर ऑफ 70s type, and they are composed of 2 subunits. Sometimes 2 subunits are separated, and sometimes many more times these two are in combined form, and one is smaller subunit जो छोटा रहता है, that is the 30s, and the bigger one is known as the 50s. Okay.